हाँ बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल. What I told in the last lecture, बेटा. Hello, sir. बेटा, what I told in the last lecture, let me know. बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, बताइए. क्वाड्रेटिक कर रहे थे ना. हाँ सर. ओके ओके. क्वाड्रेटिक में कहाँ तक हो गया था? सर एक मिनट में नोट पे करती हूँ. हम्म सर एक मिनट, वो मैं ना मेरी नोटबुक ढूंढ रही हूँ. हम्म. चलिए, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग विद सेशन. तो बेटा, फर्स्ट थिंग इज दैट द एक्सप्रेशन of the type, the expression of the type ax square plus bx plus c, where a, b, c are constant and सर आपने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़े पॉइंट्स दिए थे और एक हमने एक्सरसाइज प्रॉब्लम की थी. हाँ ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करो. एंड a is not equals to 0 is called quadratic expression. Is called quadratic expression. So the expression of the type ax square plus bx plus c, okay, where a, b, c are constant. This is the important part, beta. A, b, c are constant. This is important point. A, b, c beta constant होना चाहिए. And a not equals to 0 is called quadratic expression. Quadratic expression in variable. Quadratic expression in variable x. Quadratic expression in variable x. In variable x. Second point. If in equation 1, if in equation 1, let's say beta, if in first, first this one, this is first, and this is second, this is second. So if in first, quadratic expression is equated to 0, then it is called quadratic equation. Then it is called quadratic equation. Okay, let's say beta, this is the expression ax square plus bx plus c is expression, and it is equated to 0. It is equated to 0. So this is called beta, this is called equation. This is called equation. Got it now? This is called equation.
This is the point number 2. Point number 3 is that if ax square plus bx plus c is mentioned as quadratic expression, is mentioned as quadratic expression, then a cannot be 0. Then a cannot be 0. But if it is, but if it is not mentioned, but if it is not mentioned as quadratic, then we will consider both. Then we will consider both. Then we will consider both cases. A is equal to 0 and a not equal to 0. A is equal to 0 and a not equal to 0. Okay. A is equal to 0 and a not equals to 0. This is the point number 3. So basically beta basically beta, let's say let's say 2x square plus 5x minus 6. तो बेटा दिस इज एन एक्सप्रेशन, बेटा दिस इज एन एक्सप्रेशन, बेटा ये क्या है बेटा, सिर्फ एक्सप्रेशन है बेटा, ये बेटा एक्सप्रेशन है। बट ऐसे आ जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज बेटा, दिस इज इक्वेशन, this is equation. So beta this is expression of degree 2, so that's why we can say that this is quadratic expression. This is called quadratic expression and this is called quadratic equation. This is called quadratic equation. And let's suppose beta, let's say fx is equal to what, 2x square plus 5x minus 6. Okay, so this is fx is equal to something. So this is what? But this is quadratic function. This is better quadratic function. This is quadratic function. ये आपका बेटा quadratic function होता है, ठीक है ना। यदि fx के बराबर में आ जाए ना बेटा, तो this will be quadratic function. So this is the quadratic expression, this is the quadratic equation, and this is the quadratic function. Okay. हाँ, but the third point is that if ax square plus bx plus c is mentioned as quadratic expression, they a मतलब a means that ki coefficient of x square can't be equal to 0. But if it is not mentioned as quadratic, then we will consider both cases. A is equal to 0 and a is not equals to 0. I think beta this is to clear you guys. Anything else? बताइए बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फाइन।
फाइन बेटा, Aditi, Janvi, beta, this is clear now? Yes, sir. Okay, beta. Let us move forward. Beta, do you know something? This under root minus 1. This is called iota. Do you know? This is called iota. This is called iota. Do you know, beta? So, beta, point number 4. Point 4 is that under root of minus 1 is a non-real, or you can say that imaginary number which is denoted by I, which is denoted by I. I stand for beta iota. So beta, this is iota. Iota is equals to under root of minus 1. Beta, this is iota square. Iota square is beta minus 1. This is iota cube. Iota cube is beta minus iota. Or this is iota raised to the power 4. And this is equal to 1. This is equal to 1. Okay now. One important point beta, note that coefficient of quadratic expression can also be imaginary. देख बेटा, एक चीज याद रखना बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो कोफिशिएंट है ना बेटा, इट मे बी इमेजिनरी बेटा, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, नो डाउट, इट मे बी इमेजिनरी. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हियर कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोफिशिएंट मे बी इमेजिनरी. ओके, सो दिस इज वेरी फंडामेंटल थिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. So this is under root of minus 1 is a non-real or imaginary number which is denoted by iota beta. This is called iota beta. This is iota. This is iota. So beta, iota is equals to under root of minus 1. Iota square is minus 1. Iota cube is minus iota. And iota to the power 4 is 1. And note that coefficient of quadratic expression can also be imaginary. Okay beta. So this is the point number 4. Come on the point number 5 beta. The quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are constant, and a can't be equivalent to 0, will have exactly two roots. Say alpha and beta. Okay, and which may be real or imaginary. So basically beta, I'm already clear to you that the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. A, b, c are constant and a is not equals to 0. Will have exactly two roots beta. Say alpha and beta, and which is real or imaginary, है ना? So this is depends upon situations, what we get, real roots
or what we get imaginary roots. Okay, beta. So I think this is clear to you. Okay. So here, this is the axx square plus bx plus c is a quadratic equation. This is equal to 0. So do you know very well? X is equals to what? Minus b plus minus under root b square minus 4 times ac divided by 2a. And you can say that this is alpha and beta. आप इसको alpha and beta बोल सकते हैं. So we usually denote b square minus 4ac by capital D and call it discriminant. Call it discriminant. So in the systematically you can say कि alpha and beta is equal to minus b plus minus under root d upon twice a, because b square minus 4ac is also called discriminant, and discriminant is represented by capital D. So basically beta alpha and beta is equivalent to minus b plus minus under root d upon का twice a. So you can say है ना, this is fine. I think beta this is clear to you. Any doubt? Done beta? Fine. Samhita. Fine, sir. Could you once scroll up? Beta, this is clear now? Yes, sir. Could you once scroll up, sir? Scroll up. Yes, sir. ऊपर की तरफ जाऊं क्या? हाँ, sir. Okay, okay, okay. कहाँ बताओ? Sir, are we doing complex numbers right now? Or? नहीं, quadratic. एक बार देख लो ना. हाँ. रुको दिखा देता हूँ तुम्हें. हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले. इसका ले लो. हाँ, sir, done. एक सेकंड. अच्छे Sir, से ले. ये कौन सा चैप्टर है? Quadratic बेटा, quadratic equation. बेटा quadratic और complex दोनों साथ साथ पढ़ूंगा बेटा. I will quadratic वो मेरा डाउट था. हाँ, दोनों साथ साथ बेटा पढ़ूंगा. Quadratic and complex लिख लो बेटा. दोनों साथ साथ खत्म कर दूंगा बेटा. इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? हाँ, सर. आप ले लो इधर से. एक सेकंड. डन सर. डन ना. चलो. हाँ. नेक्स्ट वन. अब देखो बेटा कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं. एग्जांपल 1. देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करो. अब इसका रूट्स फाइंड करो.
रूट्स फाइंड करो बेटा। कैसे निकालेंगे बताओ। x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्या मैंने पढ़ाया था बेटा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का ट्वाइस है। तो क्लियरली x इजिकल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का ट्वाइस ए। तो x इजिकल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऐसे 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 अंडर रूट में कितना आता बेटा, 53 बेटा, 28 प्लस 25, आई थिंक 53 अपॉन 2। बेटा दिस इज व्हाट real and distinct roots. This is real and distinct roots. Real and distinct roots. Okay beta, this is real and distinct roots. Real and distinct roots. Let's say example number 2. Simple. Let's say x square माइनस का 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बेटा दिख रहा है, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज x-3 का होल स्क्वायर, ऑब्जर्व इट, दैट इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी कैन से बेटा, है ना, टू रिपीटेड रूट्स, टू, अब कैसे बेटा रिपीटेड, अब देखो, अब यहां से तुमको एक चीज दिख रहा होगा बेटा, x-3 का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट बेटा, कि x-3 into x-3 is equal to 0. So then finally what? X is equals to 3 and x is equals to 3 means what? Two repeated roots. What beta? 3 and 3. हाँ बेटा, one important thing is that, note that one important thing बेटा, कि x-3 whole square is equal to 0 has only one solution, only one solution, that is 3। हाँ इसका देखो, इसका भले रूट्स बेटा 2 आया, लेकिन दोनों रूट सेम है बेटा, सो सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, एक, ओनली वन सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन विल बी वन बेटा, सॉल्यूशन ओनली वन ही होगा बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो नोट इट डाउन बेटा फास्टली। I think this is clear to you guys. So beta, I'm just giving one question, last example 3. Beta, just to solve it. This is x square plus 3x plus 4 is equal to 0. Just solve it beta and let me know about the roots.
So what is your answer, beta? X equals to -3 plus or minus root 7i by 2, sir. क्या बेटा 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 जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से. X equals to -3 plus or minus root 7i by 2. वेरी गुड. चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा. देखो बेटा जी, इधर देखो. x इज इक्वल्स टू बेटा -3 प्लस माइनस 9 माइनस 16 डिवाइडेड का 2. x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 7. अपॉन 2. तो फाइनली दिस इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इसको बेटा √7 इंटू √-1 लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा समझने के लिए बेटा, जिन बच्चों जो बच्चे नए हैं अभी, है ना. अरे √ देखो बेटा, इधर देखो, √-7 है, तो इट इज ऑल्सो रिटन एज √7 इंटू √-1. ओके ना. तो √7 is simply clear, but √-1 is what? This is iota. Okay बेटा. So this is x is equals to -3 plus minus √7 iota divided by 2. Clear है बेटा. तो बेटा क्लियर दैट कि रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. बेटा रूट्स कैसा है बेटा? इमेजिनरी है. इमेजिनरी है. ओके गाइस. ओके 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 ओके. सो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा. चलो अपन एक क्वेश्चन पे और आते हैं बेटा. एग्जाम्पल 4 पे आ जाते हैं. थोड़ा सा और पे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा साथ साथ लेके चल रहा हूँ. x² प्लस आयोटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. बेटा सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर. इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए जल्दी से बेटा. तो बेटा जी फास्ट 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 फास्ट, जल्दी 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 जल्दी. Sir, x equals to -i plus or minus root 10i by 2, sir. ये बेटा जी एक सेकेंड, आई थिंक हो सकता है थोड़ा सा. आप मेरा आंसर से मिलाओ बेटा, मैं सॉल्व करता हूँ. अब देखो कैसे करेंगे बेटा. x इज इक्वल्स टू -i प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या प्लस माइनस अंडर रूट -1 -3, सॉरी -1 -8 डन ना बाई 2. बेटा दिस इज क्लियर ना? एनी डाउट? बेटा डी बी स्क्वायर माइनस 4ac आयोटा स्क्वायर इज -1 -4 टाइम्स a इंटू c -8. क्या मिलेगा बेटा? दिस इज माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट -9 डिवाइडेड बाई 2. तो दिस इज बेटा माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2.
तो दिस इज बेटा माइनस आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा बाई 2. तो दिस इज इक्वल टू फाइनली -2 आयोटा and minus iota. So I think this is your answer. हाँ, अब एक बार इसको चेक कर लो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं बेटा. दिस इज द रूट्स बेटा, क्लियर ना. दिस इज द रूट्स. ये दोनों बेटा क्या है, रूट्स है बेटे. अब रूट्स है तो बेटा इसको सेटिस्फाई करेगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको एक बार चेक करके देखता हूँ बेटा. यू जस्ट पुट x इज इक्वल्स टू आयोटा. तो बेटा x बराबर आयोटा पुट करके देखो बेटा, तो क्या बनेगा बेटा. आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू आयोटा प्लस 2. सो आयोटा स्क्वायर इज बेटा -1, दिस इज -1 एंड दिस इज +2. या दिस इज इक्वल टू 0. या दिस इज सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलर ऑफ दैट हम एक बार इसको भी रख के चेक कर लेते हैं बेटा, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. पुट x बराबर माइनस का 2 आयोटा. तो क्या मिलेगा बेटा, बताओ जल्दी से. माइनस का 2 आयोटा बेटा जब तुम पुट करेगा तो माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2. तो दिस इज फाइनली बेटा व्हाट वी कैन, दिस इज माइनस का 4 एंड दिस इज बेटा प्लस का 2. या दिस इज प्लस का 2 एंड दिस इज प्लस का 2. तो प्लस का 2 एंड माइनस का 4 गेट कैंसिल एंड वी गेट 0. या सेटिस्फाई. या दिस इज माय करेक्ट आंसर. तो रूट्स आएगा बेटा तो उसको सेटिस्फाई करेगा. दिस इज नो वेरिएबल. गॉट इट ना बेटे. एनीथिंग एल्स बेटा. ओके, वन मोर क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने हर वेराइटी का सवाल कवर कर दिया बेटा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करके दिखाओ बेटा. सॉल्व इट एंड गिव. सॉल्व इट फास्टली बेटा, फास्टली बेटा. आगे बेटा आंसर.
बेटा बताओ कैसे करोगे इसको? अरे सिंपली x बराबर बेटा क्या, माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस आयोटा divided by 2 into 1. So x is equals to minus 1 plus iota plus minus अंडर रूट बेटा क्या हो जाएगा, दिस इज 1 minus 1 plus 2 iota minus 8 minus का 4 iota divided by 2. तो क्या हो जाएगा बेटा, x is equals to minus 1 plus iota plus minus अंडर रूट minus 8 minus 2 iota डिवाइडेड बाई 2. अब बेटा इसके आगे ना अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, वो आगे हम पढ़ाएंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में, तब आपको आगे सॉल्व होगा बेटा, है ना, रेफर टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है बेटे, तो यहाँ तक बेटा कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, एवरीथिंग फाइन है बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? जानवी, Yes, आदित्य, sir. शमिता, एवरीथिंग इज क्लियर ना बेटा? यस सर. ओके बेटा, ओके ओके बेटा, गुड नाइट. ओके.